नाउ अब हम बात करते हैं इनके बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर के बारे में। आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं वो एक एसिना फेटिडा है। बहुत सारी क्वेरीज हमें आती हैं या बहुत सारे जब हम लोगों से वर्म्स की बात करते हैं या फिर वर्मी कंपोस्टिंग के यूनिट को लगाने की बात करते हैं तो देयर इज़ दिस क्वेश्चन एंड पीपल आस्क अस ऑफन कि हमको पता कैसे चले इस बारे में कि ये एसिना फेटिडा ही है, क्योंकि देर आर सर्टन सॉर्ट ऑफ ब्रीड्स विच लुक अलाइक बट दे आर नॉट एसिना फेटिडा। सो जो जो हम दिखा रहे हैं आपको या आप देख रहे हैं स्क्रीन पे वो एसिना फेटिडा वर्म है। एसिना फेटिडा और the worms which is used in vermi composting have rings on their body. Rings are also called segments. तो एक एसिना फेटिडा की अगर हम बात करें तो एसिना फेटिडा के ऊपर उसकी बॉडी में एक लाइफ साइकिल में कुछ 90 से 95 रिंग्स होते हैं। रिंग्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज सेगमेंट्स। ये जो वर्म है वो रेडिश कलर की स्किन होता है, इसकी एक लाल कलर या रेडिश कलर की स्किन होती है। When they grow old they turn a little brown. If they consume excess water they can go white. That doesn't mean कि वो कैटेगराइजेशन में या फिर कंपैरिजन में एसिना फेटिडा नहीं है और दैट कैन बी अ डिफरेंट ब्रीड। तो उसमें क्या है कि हम लोगों को ये देखना होगा कि एसिना फेटिडा when you see they should have the segments to it. Another thing which you can see in a worm is like they are not very long. Acinna fetida, when we talk about Acinna fetida worm, it's not long. It is maybe आपके हाथ में भी अगर हाथ में लेके हम उसको दिखाएंगे तो एक छोटा सा वर्म होता है, बहुत छोटे से आकार से वो बड़ा होता है। इट टेक्स टाइम फॉर अ worm to grow. It might take up to 75 days for a baby Acinna fetida to come into the full shape. We also want to talk about the other systems which a worm has. So worm की जो अंदर का आकार है वो बिल्कुल हमारी तरह है. They have a digestive system and they have an amazing digestive system because they can give you a best form of vermicompost which can be used and consumed by our crops, vegetables and what sort. So biological जो हमने ये बातें की, this is how you can make out कि this is a pure breed of Acinna fetida or not. So Acinna fetida का जो एक structure है, it is so like these worms are both male and female. So this is also called as hermaphrodite. So these creatures are both male and female and they can reproduce. Now the reproduction cycle is as such that it will take 55 to 75 days for a cocoon to get into shape and then get hatch. It contains 3 to 4 worms and I'm sure that the survival rate is more than 60%. So in an ideal situation which we were talking about all this while, we will also talk about aeration, moistures and things like that, but in ideal situation 60% or more than 60% survives and then they grow in the same bed. After couple of days, maybe like 75 to 80 another days, when they grow into structure, they will be ready to reproduce again within 75 days from the day they are born. So this is how they work and this is the the only good thing I would say Acinna fetida can give to a farmer, that you invest once and you never have to purchase worms in the entire life cycle of producing vermicomposting.